20,000 each. On one, he made a gain of 5%. And this is a very common question also. And on other, he a loss of 10%. So find his overall gain or loss. तो सबको सॉल्व करना है. नहीं guys, if you want to solve, you can solve. Otherwise, I am explaining. So Viru So ये Dada, हमने करा था. yes, Viru Dada, please Yes, sir. unmute. बेटा जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ है, so x plus 5x by 100 is equal to 20,000. Correct है? Because Yes. SP is 20,000. So Yes, sir. 105x by 100 is equal to 20,000. Yes, sir. So find x. Now जिसमें उसको लॉस हुआ है, so y minus 10y by 100 is equal to 20,000. So 90y by 100 is equal to 20,000. So y find करो, x find करो, उनको subtract कर दो. y greater है तो loss greater है. y will be the cost price. y और x तो cost price होगा. Find, एक बार cost price आ गया, you know SP, find the loss and gain. All right वीरू, ट्राई करना, नहीं आया तो मैं सॉल्व करके सेंड कर दूं. और सॉल्व कर दो, मेरे को समझ नहीं आता, मैंने ट्राई किया था बहुत बार. बेटा सॉल्व इसमें अब कैलकुलेट करना है. आप एक बार ट्राई करो, कैलकुलेट करो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो. आंसर डेसिमल्स में आएगा. अब मुझे नहीं पता ना, मैंने किया नहीं है, डेसिमल्स में आएगा कैसा आएगा. आप मुझे सॉल्व करके भेजो, मैं मिस्टेक आपकी बता दूंगा, या फिर मैं सॉल्व करके सेंड कर दूं. गुड इवनिंग सर. कैलकुलेशन ही है ना, आफ्टर दिस स्टेप तो देयर इज कैलकुलेशन ओनली. ओके सो सर. प्रोबेबली यू आर मेकिंग अ कैलकुलेशन मिस्टेक. ओके सर. When are you sending, today or tomorrow? सर आफ्टर द क्लास. Okay, great. So we were doing simple equations, chapter 14. Chapter 4. Which chapter were we doing? सर वो मिक्स उसका था सर, क्या कहते हैं. Pairing quantities. हाँ जी. आई थिंक हम 12th या कुछ पे थे. Yeah, 12th we have to 12th and 13th. यस सर. Do 12th and 13th, guys. Dheeraj, keep your camera on. Let me check with Polki. He's joining.
Mr. YY, please send to ma'am. Viransh, you have not practiced simple interest? Mr. YY, have you practiced simple interest? Yes, sir. I have practiced simple interest. Mr. President, Amy, Mikey, and Amy and Mikey. So Adve, 54 meter, okay, and 1 kilometer, 80 meters will be how many meters? सर 54/180 तो 1/2 हो जाएगा सिंप्लीफाई करके. 54 upon 180? ये सर. ओ 10. ओके सर, मेरे वहां पे गलती हो गई. 54 upon 1080. 1080. एंड बेटा 180 भी होता तो भी 1/2 नहीं होता. ओके सर. 54 अपॉन 108 होता तो होता 1/. ओके सर. So Avyan and Amira, are you able to send the 12th answer or should I तो explain? सर आंसर. सर तो आंसर वाज 5%. So you can explain. I answer beta, I will have to see. This will be 5, this will be 54. Yes, it will be 5%. Now next one, the simple interest on of sum of money. So simple interest will be 4/9 P. Any doubts in this? Doubts? Koi doubt, guys? Now 4/9 P will be equal to principal into rate and time are both equal. So let me keep it R into R upon 100. Any doubts in this? Now means R into R will be equal to 4/9 P into 100, and this will come in the denominator upon P. So P and P will get cancelled out. Now guys, R into R square becomes 400/9. So we have to find whose square is 400. So because R into R is 400, so it is 20/3. अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे 400 का 20 होगा एंड 9 का 3 होगा. So R will be equal to what? Square root. This is the sign for square root of 400/9, which is 20/3. So 20/3 is 6 2/3 or 6 years 8 months. Now guys, there is a way to find the square root of a number also. So suppose you have to find the square root of, let's say, 324. We all know that 18 18s are 324, but I will show you how to find the square root. Means किस number का square है 324. Square root means किस number का square 324. So I will do the prime factorization. पहले हम
को स्कूल में उनको सिखाए थे, जो बच्चे फेल करे थे ना इस बार एग्जाम्स में, या उनको सिखा रहे थे आज सुबह। सो किड्स लेट मी शो यू हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। मींस मुझे फाइंड करना है 324 किसका स्क्वायर है, एंड आई हैव फॉरगॉटन और आई डोंट नो। So I will do the prime factorization of 324. So 327, 3, 9, 3, 3, 3, and 1. So these are all the prime factors. So from every pair, take one factor out. 2 और 2 का पेयर है, एक बाहर ले लो। 3 और 3 का पेयर है, एक बाहर ले लो। 3 और 3 का पेयर है, एक बाहर। So the square root of 324 will be 2 into 3 into 3, which is equal to 18. So this is how we find the square root. This is not in grade 7 syllabus, but Olympiads में या फिर like this question, there will be a need where you will have to find the square root. And suppose if you forget, you can find out the square root this way. Should I give one more example? You want guys one more example? Yes or no, bhai? No, sir. नो No, sir. sir. No. Okay, let's do the 14th and 15th question. Sir, question में लिखा man sells two horses for 4,000 each, neither losing nor gaining in the deal. If he, but उसके बाद लिखा है if he sold one horse at a gain of 25%, then the other horse is sold at a loss of. यस बेटा, टोटल डील में उसको मतलब दोनों हॉर्सेस का अगर आप कंबाइन प्रॉफिट लॉस करो ना, तो इट्स जीरो पर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। ओके, अंडरस्टूड। मींस जितना एक में गेन हुआ, जितना रुपीस का एक में गेन हुआ, उतना ही दूसरे में लॉस हो इन रुपीस। अंडरस्टूड। परसेंटेज वेरी करेगा पर रुपीस में वैल्यू सेम है। बोल की हाउ मेनी मार्क्स डिड यू स्कोर इन द टेस्ट? Sir, we still didn't get to know.
My goodness. माइकी गेस था। सर सेकंड क्वेश्चन कैसा था? प्रीति, what So, happened? What happened to your hand, beta? I don't know. Like it's hurting a lot. I can't even bend it. Did you fight with Varis? No, सर ये मेरे को कॉपी करने की ट्राई कर। That's what I was thinking. Either he has fought with the dangerous and powerful Varis. Sunny, was it a guess? नो सर, सर क्लोजेस्ट आंसर जो आया मैंने वो डाल दिया। Mr. YY, is it a guess? Sir, same technique of Adit. Preeti, is it a guess? Sir, I just solved these questions today. You solved from the Olympiad book? Sir, not from the Olympiad board, but I did similar You questions. got the exact answer? So, not really. Just like. So, okay, guys. First question I don't need to explain. So, man sells two horses for this. If he sold one horse, is a gain of 25%. So, x into 125 by 100 is equal to 4000. So, x will be equal to 4000 multiplied by 4 and divide by 5. So this will be what? Rupees 3200 will be the cost price. सर फिर सीपीयू आएगी। ये सीपी होगी, will सर be the मेरा ये cost price. सर मेरी यही निकली सीपीयू, उसके बाद सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। Rupees 800 is the profit, correct? On one horse. On one horse. अब second horse में loss कितना होगा? बताओ. 800. 800। 800. So CP for second horse कितनी होगी? सर 32 सर 40. 4800। 26. 4200. 4800. तब बोलते हो कुछ ना कुछ कुछ का कुछ लिख जाता हूँ मैं. 4800, करेक्ट? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. So then what is this? Is the CP. SP is 4000. Loss percent will be 800 upon CP times 100. कर लो solve, guys. 100 by 6, which is 16 2 by 3. All right. मैंने बस लास्ट स्टेप गलत कर दिया। Understood? Not understood, guys? अंडरस्टूड। एग्जैक्ट आंसर आएगा भाई, उसमें क्यों सर आएगा नियरेस्ट आंसर? सर मेरा नियरेस्ट आया मैंने कर दिया। Why? Solve the 16th and 17th. So guys, at the remaining peers at a profit of overall 10%, means उसको deal में overall profit 10% का हुआ. The question's language is a bit unclear. So overall profit is Sir, 10%. the sir dozen is 12.
Yes, beta, yes. Bulky, you must have already learned how to calculate square roots. Yes, sir. So right now we are doing Pythagoras theorem. So I will also teach you that. Yes, sir. Pythagoras what? This Python, beta, haven't you seen Python? We learn about the learning and hunting habits of pythons. Haven't you heard about pythons? How pythons hunt and everything? Sir, can we have a 4 minutes break? So Veera, did you solve it or you send the best closest answer? सर 16th तो मैंने सॉल्व किया था 17th का मैंने बस रैंडमली कुछ Okay, बोला you सर can take a 16th का break. एग्जैक्ट आंसर नहीं है You can सर take a break. अप्रॉक्स में आता है 16th का एग्जैक्ट Approx में नहीं। आता है तो wait करो बेटा. You wait. Only Savera got a exact answer. Viru, keep your camera on. Viransh, Barara, यस सर keep your camera on. ओके
और मैं एक बार फिर से देख सकता हूँ आंसर? यस सर प्लीज। आंसर एग्जैक्ट ही आ रहा है सर, मेरे को थोड़ी हैंड राइटिंग नहीं समझ आई अपनी। Didn't check. All right, guys, let me explain Amy and Polki and Mikey. So, second question, how did you get it wrong, Mr. YY and like? Sir, I don't know. So, Mini purchased a dozen handkerchiefs for 60 and sold them for 84. तो guys, मेरा profit कितना हो गया? 24. 24. CP कितना है? 60. सर मेरा डजन प्रॉफिट मैंने मेसअप कर दिया था, पता नहीं कैसे, but बेटा मेरा वन की निकालने का जरूरत ही नहीं है बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज ऑलवेज रिमेन्स द सेम, चाहे 1 का लो चाहे 1000 का लो, ये कर तो लो। मैंने 1 का लिया था, कैसे तभी हो रहा है। ऋषि का परचेज 1 में भी सेम आएगा, सोल्ड देम फॉर 60, सो 60 अपॉन 90 इंटू 100। तो जस्ट ये करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अंडरस्टूड माइकी? दिस इज प्रॉफिट, दिस इज सीपी। 1 का निकालने का जरूरत ही नहीं है, देर इज नो नीड टू फाइंड फॉर 1। डू यू अंडरस्टैंड माइकी? तो यहाँ पे आपने 1000 क्यों लिखा? इंटू 100 बेटा, दिस इज 100 में टाइप हो गया हो। अंडरस्टूड? जो मैंने भी तो यही किया, तो मेरे क्यों गलत आ रहा है? आपने फिर सब्ट्रैक्ट किया? मेरे सिंपलीफाई भी तो किया मैंने। अरे बेटे 2/5, दिस विल बी 20, दिस विल बी 40%, तो this will be 2/3, this will be 26.67%, 26, 266.67%, 200/3, difference will be 26.67%. So whose profit is more? Trishika's profit is more. By how much? By 26.6%. आपने 200/3 लाइक डिवाइड किया था? Yes, बेटे डिवाइड किया था मैंने। Can I also take a break? No. So now we will understand the 16th question since most of you got it wrong. You want a break, guys? Yes, so please sir. Okay, Yes, take a sir. 3 minutes break. Them 25 were spoiled and thrown away. She sold the remaining pears at a profit of 10%. So total profit will be 10% of what 80 pears of rupees 40. So what will be the total profit, kids? 10% of rupees 40, which is rupees 4. So till the first step understood, guys? Yes, sir. So total profit is 44. So SP will be equal to 40 plus 4, that is equal to rupees 44. So 25 were spoiled. So how many good were there? Good peers were there? 55. 80 minus 25, that is equal to 55. So then she should get 44 from 55 peers. So SP of 1 peer will be 44 upon 55.
55, which is equal to 4 by 5, which is equal to 0.80 rupees. So understood, not understood? Understood. Yes, sir. So first I found the profit that she was hoping for. She was hoping for a 10% profit. So she was hoping for a SP of 44 rupees. So 25 pears were, rotten or spoiled. So then she had to collect 44 rupees from the remaining 55 pears. So she got 4 by 5, that is 0.80 rupees per pear. And that is a very realistic question in the sense that when hawkers, purchase vegetables and fruits, they always take a margin for the fruits that will be rotten or they will not, and they will not be able to sell them. All right, understood? Yes or no? Yes, sir. So Kavleen invited 24 of her friends. So do the 18th and 19th question.
All right, Preeti and Emmy. So I said my answer. Sir, I'm just sending him. Okay. So the school has 560 students. The number of girls is this much. So if the number of girls is this much of the number of boys, so let boys be X. Boys be X. So girls will be equal to how much? So 100 by 20 into by 7% 7x. of X, which is equal to 100 by 7 into 1 by 100 into X. Do you agree with this? So 100 will be cancelled, it will be X by. Yes. 1/100 कैसे आ गया? बेटा अगर 25% बोलूं तो 25/100 नहीं करते, Yes, sir. बस 1/100 डिनोमिनेटर में आ जाता है. Okay. So X plus X by 7 is equal to 560. So this will be 8x by 7 is equal to 560. So x is equal to 560 multiplied by 7 divided by 8, which will give you 490. So these are number of boys. So girls will be, after subtraction, I will get 70. So Viru, Mikey, Dharya understood? Yes, sir. Sure? Yes. नहीं sure होगा समझ. पक्का ओके? Yes, sure. So यहाँ पे 2x कैसे है? Like एक x हो नहीं गया? Beta see, 1x is number of boys. 1x is number of girls. अब number of girls कितनी है? जैसे मैं बोलूं 5% of boys. So 5x by 100. अब इसमें 100 by 7% of boys. So 100 by 7% of x. Yes, sir. Understood? माइकी, हमारी प्रैक्टिस कब चालू होगी बेटा? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. आप पर प्रैक्टिस कर रहे हो? आर यू प्रैक्टिसिंग? टेल मी माइकी. मैं करता हूँ IMO वगैरह. आईएमओ कितने चैप्टर्स हो गए ग्रेड 6 बुक से? तो ग्रेड 6 बुक है तो ढूंढनी पड़ेगी शायद. कितने चैप्टर्स हो गए अप्रोक्सीमेटली? 7? तो 6 के अराउंड तो हो गए होंगे. Any doubts? Are you having any doubts from? तो यस तो थोड़े से डाउट होते हैं, वो मैं लाइक जब लाइक ज्यादा होंगे तब पूछूंगा. तो एक बार सॉल्यूशन से रेफर कर लो उनको. यस सर सर. आपने आप मुझे मना ऐसे तो करा था समझ आ ये मैं जाता है. वो को। सर 36% मैक्सिमम मार्क्स है. maximum marks to pass, one should get 36 of the maximum. Means अगर max total marks 100 है तो passing marks is 36. Yes, Dheeraj, what did you say? सर आपने मुझे आईएमओ वो करने से मना करा था, आपने बोला था सिर्फ ग्रेड 6 की प्रेप गाइड करो, नहीं क्योंकि बेटा, यू मेरे कैन डू लास्ट आईएमओ वर्कबुक. आपने लास्ट ईयर की हुई है ना, तो जो मिस्टेक्स थी वो कर लो, या ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो कर लो. सर कहते मैं प्रेप गाइड से कर रहा हूँ. ठीक है, प्रेप गाइड इज ऑल्सो फाइन. उसके बाद आईएमओ भी कर लें. लाइक 20-25 क्वेश्चंस होते हैं, पूरे 20 क्वेश्चंस ही होते हैं आई थिंक ग्रेड 6 में. तो
माइकी, पोलकी, प्रीति, सवेरा. So just send me. Myra, Mikey, Dheeraj. 22nd question is actually easy. So, first of all, first question, Mr. YY, what are the passing marks? So the passing marks are, so let me check. So 198. 198. So it means that let total marks be X. So if you find 36 by 100, because those are the passing marks, so 36% of X will give you 198. Yes, Understood, not understood? you're understood. So then you can simplify X equal to 198 into 100 upon 36. So should I simplify or should I leave it? So simplify. 550. So I cut with 2, then I cut with 18. But sir, when I checked it, it was coming wrong. My answer coming was 550 only. But when I tried to check it, the answer was coming wrong. बेटा अभी आप कर लो 550 into 36 by 100. So 0 cut, and here 5 2s are 5 11s are, and here 18 into 11 will give you 198. Oh, तो sir simplify गलत हो गई. Polki understood? Miss Polki? Yes, sir. Okay. Next, a farmer bought this much at 5%. So those who got it wrong, Amira, Dheeraj, Mikey. Guys, simple interest क्या होगा? How will I calculate the simple interest? Sir, rate into time into interest. So Avyan, beta, you also got it wrong now. So you also need to speak. So principal into rate into time upon 100. So it will be 55 into 40. So 55 into 4 will be 220. So it will be 2200, correct? Any doubts in this? So what will be the amount that he needs to pay? Sir, he needs to pay 500, 500 plus 2200. अव्यान समझ में आ रहा है ये? 7700. 7700. 7700. minus So 6. then the cow, he paid 6000 and the cow. So cow will be 1700 rupees cost. रोहित तो मैंने भेजा था. आपने मिसटाइप कर दिया होगा. So Avyan and Amira, did we understand? No. Yes, sure. Yes, sir. 23, 24, 25. So guys, अभी करना है, next class में कर लेंगे. Next class. Next class. Next class. All right guys, next class. विरांश आप मुझे अपना screenshot भेज देना, ठीक है? Okay guys, bye. I'll see you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.